Good morning students, this is Sakhi Gopal Panda and I am going to start this lecture of how to solve quadratic equations using formula method. अभी तक हम लोग quadratic equations solve करने के लिए factorization method देखे, completing the square method भी देख लिया. But now in this session I am going to start the quadratic equation solution with formula. As we know, the standard quadratic equations can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. एंड फ्रॉम दीज कोफिशिएंट a, b and c we are going to use the value of the formula as x is equal to minus b plus minus रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमको रिमाइंड करना पड़ेगा. दैट यही फॉर्मूला है जो हमको हेल्प करेगा दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. ओके, एंड यहाँ पर हमको एक और चीज़ मिलती है जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं. d इज नथिंग बट discriminant which is denoted which can be calculated from minus b square minus 4ac. ये जो ब्रैकेट रूट के अंदर में लिखा हुआ b square minus 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. और ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये रूट के नेचर को बताता है. मीन्स वैल्यू ऑफ जो x है उसके नेचर को बताता है कि वो किस टाइप का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या इसके अलावा भी कोई नंबर है, उसके बारे में हमको बताता है. इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इसके बाद एक और लेक्चर होने वाला है. सो नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल as quadratic equation given x minus 1 multiplied by 2x minus 1 is equal to 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बट ये फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसा नहीं है. अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं पहले. सो जस्ट मल्टीप्लाई x इंटू 2x, दिस नथिंग बट 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस x, माइनस 1 इंटू 2x इज इक्वल टू माइनस 2x, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज नथिंग बट प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ 2x square minus x 2x, this gives minus 3x plus 1 is equal to 0. Let's take this as equation number 4. ठीक है ना. कंपेयर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ता है. कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. We will have the values of x, a क्या है हमारे पास, coefficient of x square. So coefficient of x square is nothing but 2. Similarly coefficient of x is b and coefficient of x is equal to minus 3. And what about c? c is equal to 0. C is equal to 1. Okay, now calculate the value of discriminant. Discriminant d is equal to b square minus 4ac. So d is equal to, what is b? Minus 3. So minus 3 square minus what is 4ac, that is 4 into a is equal to 2 and c is equal to 1. Okay, so d is equal to 3 3s are 9 minus 4 2s are 8 is equal to 1. This 1 is nothing but the value of discriminant. So if we want to calculate the value of x, यहाँ पे x हमको calculate करना है, then put the value of d here also, or we can go for direct calculation also. So just put this equation in mind and I am going to solve this using formula. The equation is, again I am going to write given
quadratic equation is 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. We have, what do we have? We have a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 1. ये पहले हम लोग देख चुके हैं. Now just write down the formula. We know x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. Okay, now I am going to just part down this. Now put the values here. X is equal to minus b. What is the value of minus b? B is equal to, sorry, this one is minus of minus 3. This is minus and b is equal to minus 3 plus minus root over b square minus 4. B square is nothing but minus 3 whole square minus 4 into 2 into c is 1 upon 2 into a. What is a? This is 2. Okay, now let's move forward. X is equal to minus into minus is plus 3 plus minus root over 3 square is nothing but 9 minus 4 2s are 8 upon 2 2s are 4. So this is the value of x. Now 3 plus minus root over 9 minus 8 is nothing but 1 upon 4. We have already discussed about the value of 1. अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किए, दैट इज t is equal to 1. नाउ वी गॉट द सेम वैल्यू हियर. तो हम लोग ये सारा फॉर्मूला ना लगा करके डायरेक्ट भी d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उसको सेपरेट से कैलकुलेट करके. नाउ दिस इज 3 प्लस माइनस, व्हाट इज द रूट ऑफ रूट 1? दिस विल गिव 1. ओके, नाउ यहाँ पर हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रहा है बट नॉट द नेचुरल फॉर्म. पहले क्वेश्चन में जैसे हम लोग करते थे वैसे यहाँ भी करना है हमको. टेक प्लस साइन, टेक प्लस साइन. If I take plus sign then I have to just use the plus sign here. So 3 plus 1 upon 4. This will give the value of 3 plus 1 is 4 upon 4. So we will get the value of x as 1. Now second step, take minus sign. Using this minus sign we will have the value as 3, use minus 1 upon 4. So x is equal to 3 minus 1 2, 2 upon 4 is nothing but 1 by 2. This is 2. So in this way we can calculate the value of x as 1 and 1 by 2. ये जो वैल्यूज हैं 1 by 2 है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, therefore we have to use such formula to calculate such typical complicated values. Now let's take another question from the book, textbook. Let's take a quadratic equation. This is a question from the book. Given quadratic इक्वेशन S. हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ द सेम स्टेप, compare the equation with standard equation. What is standard equation? Ax square plus bx plus c is equal to
0. Okay, now we will get the value of a is equal to, a is nothing but x, coefficient of x square, that is root 3. A is equal to root 3. B is equal to coefficient of x, that is minus 10, and C is equal to minus 8 root 3. ये तीन वैल्यूज हमको मिल गए. Okay, I am just parting down this page, and we know the formula x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. Okay, now put the values of a, b and c here. I will get the value of minus b. What is b? This is minus 10. Be careful by putting the values here. B square is nothing but minus 10 square. Okay, minus 10 square minus 4 into a. What is a? This is root 3. What is c? Minus 8 root 3. Okay, upon 2 into value of a is nothing but root 3. Now x is equal to minus of minus 10 is nothing but plus 10 plus minus root over 10 square is nothing but 100, minus into minus is nothing but plus, and 4 8s are 32, and root 3 into root 3 is nothing but 3. So we have 32 into 3 upon 2 root 3. So now move forward. X is equal to 10 plus minus root over 100 plus, how much this is? 3 2s are 6 and 3 3s are 9 upon 2 root 3. Now this will give a value of x is equal to 10 plus minus root over 196 upon 2 root 3. Okay, now move forward. We have x is equal to 10 plus minus, what is root 196? Root 196 is nothing but 14 upon 2 root 3. Okay, now just go for the standard form, that is take plus sign at first. Take plus and consider this plus sign. We will have x is equal to 10 plus 14 upon 2 root 3. This will give a value of 10 plus 14 is nothing but 24 upon root 2 root 3. So 2 12s are 24. So I will have the value 12 upon root 3. This is the first value of x. The second step is take minus sign. X is equal to, what is minus sign? 10 minus 14 upon 2 root 3. This will give a value of minus 4 upon 2 root 3. That means x is equal to minus 2 upon root 3. 2 2s are 4. So in this way we have the values of x as 12 upon root 3 and minus 2 upon root 3. So this is a typical method that how to solve a quadratic equation using the formula method. I hope you can understand, you can solve the questions given in textbook. और इसके बाद फिर एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर का, और उसमें हम लोग देखेंगे that how to calculate या how to know the nature of roots of quadratic equation. Okay, so all the best for the exercise, and for doubts ask those. So in this way, in the next part I will go for the nature of roots. Thank you.